हेलो दोस्तों एंड अ ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। फाइनली वो गुड न्यूज़ आ ही गई जिसका आप सबको स्पेशली एसएससी जेएसए स्लैश एलडीसी 2020 के एएफएचक्यू कैडरे वाले कैंडिडेट्स को बहुत बहुत टाइम से इंतजार था। Yes, you heard that right. आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हो गया है. The Staff Selection Commission has officially declared the final result for the Junior Secretariat Assistant slash Lower Division Clerk 2020 exam, specifically for the AFHQ cadre. चलिए इस नोटिफिकेशन को एकदम डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करते हैं. Okay, but before we jump into the numbers and cutoffs, let's address the elephant in the room. I know सबके मन में यही सवाल है कि भाई इतनी देर क्यों हुई? बाकी सब कैडर्स के रिजल्ट्स तो कब के आ गए थे, राइट? So here's the whole story. The main villain in this delay was एक कोर्ट केस. देखिए, it all started back in May 2023. एक कोर्ट ऑर्डर आया जिसकी वजह से रिजल्ट्स को होल्ड पर डाल दिया गया. फिर एक लंबा वेट चला until May 2025 जब ये केसेस फाइनली डिसमिस हो गए. That's when things started moving. पहले 2019 बैच का रिजल्ट क्लियर हुआ और अब फाइनली सितंबर 2025 में 2020 बैच का इंतजार भी पूरा हुआ है. Alright, so I hope the reason for the delay is crystal clear now. चलो अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका आई एम श्योर आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार है. लेट्स टॉक नंबर्स, वैकेंसीज एंड द ऑल इंपॉर्टेंट कट ऑफ मार्क्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी यूआर. यहाँ पर टोटल वैकेंसीज थी 16 एंड एग्जैक्टली 16 कैंडिडेट्स हैव बीन रिकमेंडेड. और कट ऑफ की बात करें तो द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट स्कोर्ड 137 मार्क्स. दिस स्कोर रियली टेल्स यू जस्ट हाउ टफ द कॉम्पिटिशन वॉज. Now, you might have noticed a little star, an asterisk, right next to the number of recommended candidates. So what's that all about? Let's find out. Well, that star is there to highlight something really cool. It shows that one SC candidate and one PWD candidate qualified based on the UR standard. Basically, in simple terms, उन्होंने इतना amazing score किया on their own merit कि वो UR cutoff से भी आगे निकल गए और अपनी सीट पक्की की. That is just a fantastic achievement, isn't it? Okay. Another really common question that pops up is about tiebreakers. सोचो, अगर दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स एकदम सेम आ गए, बिल्कुल बराबर, तो फिर रैंक कैसे डिसाइड होगी? Let's take a look at the Commission's official policy for this. So it's not random at all. The Commission follows a very specific step-by-step procedure. First, they look at the marks in Paper 1. अगर वहाँ भी tie है, they move to Step 2. Marks in Part A of Paper 2. If the tie is still not broken, फिर देखे जाते हैं total marks in Paper 2. और अगर इन सब के बाद भी score same रहता है, then the older candidate gets the higher rank. Simple as that. Alright, so the result is out, and we now understand the tiebreaker policy. But what happens now? What are the next steps for all the selected candidates? Okay, now this is super important, so please pay attention. The official notification clearly states that this list is purely provisional. So what does that mean? It means your final selection is subject to you fulfilling all the eligibility conditions. Your documents, your photo, your signature, everything will be verified, and only then will the selection be confirmed. And one last but very important update for everyone. It doesn't matter if you've qualified or not. The detailed marks for all candidates will be uploaded on the Commission's website very, very soon. So make sure you keep an eye on the official SSC website for that. So, first things first. To everyone who has been selected, a massive, heartfelt congratulations from all of us here. A very long wait has finally ended and a new, exciting journey is just beginning. हमें comments में ज़रूर बताइएगा कि आपका result कैसा रहा. We'd love to hear from you. And hey, if you found this breakdown helpful, please do hit that like button, share it with your friends who might need this info, and of course, subscribe to the channel for more clear and timely updates just like this one. Thanks so much for watching.